हाय ऑल, होप यू ऑल आर वेल। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक वॉल मेकओवर वीडियो जो मैंने और मेरे बेटे ने किया है, एंड इट हैज़ बीन रियली अ फन एंड क्रिएटिव एक्सरसाइज फॉर बोथ ऑफ अस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली एज यू कैन सी, ये जो वॉल्स हैं वो अहान ने बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट कर दी हैं, तो पहला काम है उसको स्क्रब ऑफ करना। सो आई एम गेटिंग द सैंड पेपर, और ये दो कलर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे टू पेंट द वॉल। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, बट सिंपल सा एक ट्राई है टू मेक योर होम लुक एंड फील गुड। सो फर्स्टली पूरा स्क्रैप ऑफ करेंगे इसको। यू कैन सी इट्स लिटिल डस्टी, इट इज़ विथ ऑल दिस डिफरेंट कलर्स ऑन इट। तो सबसे पहले इसको मैं क्लीन अप करूँगी, एंड उसके बाद what I'm trying to do is to do an ombre effect, which is like first a base coat which is darker tone, उसके बाद light tone और एक और light tone. So this is my intention. पता नहीं कितना हुआ है, लेकिन the exercise was full of fun. So with that, इसलिए मैं सिंपल से दो कलर्स लेके आई हूँ. So the color is ocean green, yeah I think ocean green, and the other is white. तो ये दोनों को मिक्स करके हम लोग 3 शेड तैयार करके यूज़ करने वाले हैं. So scrapping हो चुकी है. Now here is my son. He couldn't stop himself, so he started with this base coat, which is the lower wall, which we are coloring it with the ocean green color. Simple scrapping, and after that I've used this roller. This is first time for me and for him also. So हम लोग right away जैसे आ रहा है that we are going ahead with, and this is the two of us. I got a chance to pick pick this a roller and with a brush. So he's doing with roller, I'm doing with brush. You can see half of it is done. Right, so first layer is done. Now it's time for the second layer. So you can see मैंने mix किया है इसमें white color और एक medium shade create किया है with the help of white, and I'm painting it all the way up. Similarly एक और shade of white मैं add करके I'll create another lighter tone, and I'll do in the last layer, which is towards up the wall. So in between I couldn't shoot, but this is how it has come out. You can see in this particular clip. So beach kite could not be the way I wanted, but nevertheless still looking good. I am able to see all the 3 shades. In between I have to give it some touch-ups later, but for now I'm satisfied that it is fine. And then I decorated the wall with some artifacts from Amazon, and it turned out pretty well. So you can also try that the way you want to. And with this I'm bringing